So actually, carbohydrate, which is otherwise called as saccharides, otherwise called as saccharides. These are actually hydrates of carbon, which are carbohydrates. ये उसका फॉर्मूला है. So this is actually the structure, the formula of what? The monosaccharide. There are actually 3 to 4 different type of carbohydrate. एक है monosaccharide, एक है oligosaccharide, and third is polysaccharide. मोनोसैकेराइड का भी और एक मॉडिफाइड फॉर्म है, that is called as what? Derived monosaccharide. So this is the formula of the monosaccharide. So we'll start. As we know, actually carbohydrate में क्या क्या प्रेजेंट होता है, क्या क्या मेनली प्रेजेंट होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा, एल्डिहाइड ग्रुप भी प्रेजेंट होगा, कीटोन ग्रुप भी प्रेजेंट होगा. तो हम लोग स्ट्रेट आते हैं मोनोसैकेराइड, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड हम ट्राई करेंगे, बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं जाएंगे. पहले आते हैं मोनोसैकेराइड. देखिए पिछले 5 ईयर से हम लोग देख रहे हैं कि बायोमोलिक्यूल एंड बायोटेक्नोलॉजी का प्रायोरिटी बहुत ज्यादा है. इसीलिए बायोमोलिक्यूल को आप बढ़िया से समझेंगे तो बाकी चैप्टर भी इजी हो जाएगा, एंड क्वेश्चंस यहाँ से फ्रीक्वेंटली रहता है. आज के डेट में बायोटेक एंड बायोटेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा प्रायोरिटी है, याद रखिए. सो मोनोसैकेराइड actually it is found of 3 to 7 carbon. 3 to 7 carbon. So accordingly, number 1 is triose, tetrose, pentose, hexose, heptose. Triose means 3 carbon. This is 4 carbon, this is 5 carbon, this is 6 carbon, and this is 7 carbon. Example दें तो ट्राइस के अंदर एग्जाम्पल क्या आएगा? ग्लिसरॉल्डिहाइड, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, 4 कार्बन के अंदर एरिथ्रोज, थ्रियोज, पेंटोज के अंदर कौन आएगा? राइबोज, राइबुलोज, जाइलोज, एराबिनोज,
हेक्सोज के अंदर ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, मैनोज, हेप्टोज के अंदर 7 कार्बन, pseudoheptulose and glucoheptose. These are actually different type of monosaccharide. तो इसीलिए क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के देगा, ट्राइसैकेराइड एंड ट्रायोज में डिफरेंस है कि नहीं? ट्राइसैकेराइड क्या है? ट्राइसैकेराइड क्या है ना, 3 सैकेराइड और 3 मोनोसैकेराइड टुगेदर टू फॉर्म ट्राइसैकेराइड, बट ट्रायोज क्या है ना, 3 कार्बन कम्स अंडर मोनोसैकेराइड. इसीलिए ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, पेंटासैकेराइड अलग चीज है, ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज ये अलग चीज. ग्लूकोज को हम लोग अदरवाइज क्या बोलते हैं? ब्लड शुगर, ग्रेप शुगर, ठीक है, डेक्स्ट्रोज शुगर, राइट. और क्या बोलते हैं? हाँ, और क्या होगा? बोलिए बोलिए, दिमाग लगाइए. ग्लूकोज और क्या हो सकता है? बोलिए, कौन शुगर होगा? कॉर्न शुगर और माल्ट शुगर में डिफरेंस क्या है? कॉर्न शुगर कौन है? ग्लूकोज. माल्ट शुगर कौन है? माल्टोज. गैलेक्टोज. गैलेक्टोज को अदरवाइज क्या बोलते हैं? हाँ, ब्रेन शुगर, एज इट इज ए पार्ट ऑफ द CSF. फ्रुक्टोज, फ्रूट शुगर, स्वीटेस्ट शुगर. और क्या बोलते हैं? लेवुलोज शुगर. देन सुक्रोज. सुक्रोज को क्या बोलेंगे? केन शुगर. और टेबल शुगर होगा, also called as preservative sugar. Then maltose, malt sugar. Then lactose, milk sugar. ये सब कॉमन नेम है. देखो, मोनोसैकेराइड में हम लोग 2-3 एग्जांपल देंगे, जैसे कि स्पेशली ग्लूकोज, राइबोज, फ्रक्टोज, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे. स्टार्ट करें. पोजीशन देख लेते हैं. फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ, फिफ्थ एंड ऊपर रहेगा 6th पोजीशन. फर्स्ट पोजीशन of carbon is present near the oxygen. दिख रहा है आपको?
मैं चेन फॉर्म में नहीं जा रहा हूँ, मैं रिंग फॉर्म में डायरेक्टली आ रहा हूँ. So the hydroxyl group present in the carbon which is present near the oxygen, if it is written below, बात को समझे? तो hydroxyl group which is present in the carbon near the oxygen, if it is written below, then it is called as alpha. If it is written above, beta. ये applicable to all. देख लीजिए कि कार्बन नियर टू ऑक्सीजन, उसमें OH ग्रुप ऊपर है कि नीचे, अकॉर्डिंग टू दैट अल्फा एंड बीटा. तो वो अल्फा ग्लूकोज हो सकता है, बीटा ग्लूकोज हो सकता है, अल्फा राइबोज, बीटा राइबोज, अल्फा फ्रुक्टोज, मेनली बीटा फ्रुक्टोज होते हैं. So here this is the structure which is called as alpha glucose. And glucose mostly D फॉर्म में एग्जिस्ट करता है कि L फॉर्म में? D, इसीलिए उसको अल्फा डी ग्लूकोज बोलते हैं. मैं बताऊंगा आपको अल्फा डी का मतलब क्या है. डी का मतलब क्या है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी की लेवो रोटेटरी? डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब क्या है? तो कॉइलिंग, जो चेन फॉर्म जो होता है ना, चेन फॉर्म का जो रोटेशन है विथ रेस्पेक्ट टू द पोलर लाइट, विथ रेस्पेक्ट टू द पोलराइट लाइट, ये राइट कॉइल हो रहा है कि लेफ्ट कॉइल हो रहा है? राइट होगा तो डेक्स्ट्रो, अगर लेफ्ट हुआ लेवो. इसीलिए फ्रुक्टोज को हम लोग क्या लिखे? लेवुलोज सुगर. मतलब फ्रुक्टोज क्या होगा? एल फॉर्म की डी फॉर्म? एल फॉर्म. Mostly glucose exist in the D form and fructose exist in the L form. तो जैसे कि मैंने बताया OH अगर ऊपर हो गया तो that will be beta. राइबोस के बारे में भी देख लेते हैं. ये क्या है? राइबोस है. बीटा राइबोस की अल्फा राइबोस? ये बीटा राइबोस. नेक्स्ट आते हैं फ्रुक्टोज. हियर सेकेंड पोजीशन में जो कार्बन है दैट इज प्रेजेंट नियर द ऑक्सीजन, उसमें OH ऊपर है कि नीचे है? देन बीटा हो गया, अल्फा हुआ. एंड दिस इज 6 कार्बन. दिख रहा है आपको? मतलब ये हेक्सो सुगर है. एंड दिस इज फ्रुक्टोज. एंड फ्रुक्टोज जो होते हैं मोस्टली एल फॉर्म में होते हैं. सो बीटा एल फ्रुक्टोज आप लिख सकते हैं. तो मैं मेंशन कर देता हूँ.
It is written above, then it is called as alpha form. So H group near the oxygen, if it is written below, ऐसे उल्टा हो गया, written below होगा तो अगला. It is written above, then it is called as beta. Complete है क्या? चलिए नेक्स्ट पेज में. Monosaccharides are have asymmetric carbon which rotate polarized light either right hand, then it is called as positive, or dextrorotatory, or D, और लेफ्ट हैंड को हम लोग बोलेंगे नेगेटिव और लेवोरोटेटरी और एल फॉर्म. इसीलिए ग्लूकोज को मोस्टली डी फॉर्म बोला जाता है, फ्रुक्टोज को एल फॉर्म बोला जाता है, राइबोज आल्सो डी फॉर्म. बाकी नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज pyranose form and what is furanose? Pyranose and furanose में difference क्या है? The pyranose में 1 oxygen and 5 carbon. Pyranose ring and furanose ring. पहली बात तो pyranose जो है that is hexagonal. This is pentagonal. Right? Hexagonal रिंग के अंदर, आप रिंग को देखिएगा, रिंग के अंदर क्या है ना, 5 कार्बन होता है एंड 1 ऑक्सीजन. क्योंकि ये वाला जो स्ट्रक्चर है, देख लीजिए एक सेकेंड, ये वाला जो डायग्राम आपके सामने है, ये क्या है, हेक्सागोनल है कि नहीं? एंड उसमें हाउ मेनी कार्बन, 1 2 3 4 एंड 5, एंड हाउ मेनी ऑक्सीजन, 1. क्योंकि ये वाला जो कार्बन है वो आउटसाइड द रिंग है कि इनसाइड द रिंग? यस. तो इसीलिए मैंने लिखा पायरानोज क्या होगा ना, हेक्सागोनल विद 5 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन विद इन द रिंग. सो फिर ग्लूकोज पायरानोज. राइबोज क्या होगा ना, पेंटागोनल विद 4 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन. तो राइबोज क्या है, पायरानोज है कि फ्यूरानोज है? फ्रक्टोज क्या है? पायरानोज कहां से दिखाई दे, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है क्या? अरे क्या दिखाई दे रहा है, फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर पेंटागोनल है कि हेक्सागोनल है? और मैंने क्या लिखा है, मतलब व्हाट इज द मीनिंग एक्चुअली फ्यूरानोज ना, पेंटागोनल विद 4 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन. देखिए फ्रुक्टोज में 1 2 3 4 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन है, तो फ्रुक्टोज क्या होगा, फ्यूरानोज की 5 फ्यूरानोज होगा. So it is the hexagonal, sorry, it is the hexose sugar but with furanose structure. ये hexose sugar है, 6 कार्बन है, but still it is the structurally furanose. ये है क्वेश्चन. ठीक है.
Hexagonal with 5 carbon, 1 oxygen is called as pyranose. Furan हो जाएगा pentagonal with 4 carbon and 1 oxygen. तो pyranose में एग्जांपल देंगे ग्लूकोज का, यहाँ पे एग्जांपल देंगे ग्लूकोज दे सकते हैं, गैलेक्टोज दे सकते हैं, एंड पायरानोज में आप एग्जांपल देंगे राइबोज, देन फ्रक्टोज. कंप्लीट. We are coming to the end of the monosaccharide. Now we are coming to derived monosaccharide. Derived monosaccharide means it is actually modified monosaccharide. It is a modified monosaccharide. तो हम एग्जांपल देते हैं modified monosaccharide का. Supposed to be first we are coming to deoxy sugar. First is deoxy sugar. Deoxy sugar में एग्जांपल हम देंगे deoxy ribose sugar. तो राइबोज सुगर का कौन सा ग्रुप रिमूव हो रहा है यहाँ पे? बी मतलब रिमूवल, सेपरेशन. ऑक्सीजन प्रेजेंट इन विच पोजीशन? सेकेंड पोजीशन का ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा, एंड दैट इज बाय द डीऑक्सी राइबोज सुगर को अदरवाइज हम लोग क्या बोलते हैं? 2 डीऑक्सी राइबोज. So here, first, second, third, fourth, and fifth. So we are getting a deoxygenation in second position. That gives rise to यहाँ पे देख लीजिए क्लियरली. This is beta ribose. Deoxygenation second position में हो गया. Now it is called as what? Beta deoxyribose. इस टाइप का क्वेश्चन आपको कभी भी मिले, डीएनए रिलेटेड क्वेश्चन, आरएनए रिलेटेड क्वेश्चन, न्यूक्लियोटाइड रिलेटेड क्वेश्चन, न्यूक्लियोसाइड रिलेटेड क्वेश्चन, तो 100% आप लोग पहले कौन सा पोजीशन को पहले देखेंगे? डायग्रामेटिकली दिया है तो पहला आपका नजर कहां पे जाना चाहिए? सेकंड पोजीशन. If it is OH in the second position, then it is a component of RNA. If it is the H in the second position, it is a component of DNA. क्योंकि दो डायग्राम दे रखा होगा सपोज टू बी. ठीक है, ये भी साइटिडीन है, ये भी साइटिडीन है. साइटिडीन मतलब क्या है? साइटोसिन प्लस, थोड़ा बहुत तो जानते हो ना, पढ़े थे 11th में. सुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस togetherly called as nucleoside. Nucleoside with phosphate, it is called as nucleotide. Many nucleotide called as polynucleotide or nucleic acid. सपोज टू बी सुगर के साथ साइटोसिन हमने ऐड कर दिया, तो सुगर प्लस साइटोसिन क्या हो गया? न्यूक्लियोसाइड हो गया, एंड दैट इज न्यूक्लियोसाइड इज कॉल्ड एज साइटिडीन.
2 साइटिडीन का डायग्राम दिया है, आपको पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ डीएनए और कंपोनेंट ऑफ आरएनए, और बोथ आर कंपोनेंट ऑफ डीएनए और बोथ आर कंपोनेंट ऑफ आरएनए। क्या देखना है? सेकंड पोजीशन, शुगर में OH है कि H है। अगर OH होगा तो दैट इज ए कंपोनेंट ऑफ आरएनए, अगर H हो गया दैट इज ए कंपोनेंट ऑफ डीएनए। ऐसे क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आता है, ध्यान रखिएगा। नंबर 1, वी आर कमिंग टू नंबर 2, एमिनो शुगर। Amino sugar, the amino group present in the sugar. Example दे सकते हैं ग्लूकोजामाइन। And what is the location of the glucosamine? Glucosamine कहाँ में present होता है? ये स्काइटीन होगा, फंगल सेल्यूलोज, और कहाँ पे है? हाइलुरोनिक एसिड। टिश्यू चैप्टर में पढ़े थे ना हाइलुरोनिक एसिड? अरे नहीं पढ़े तो मैट्रिक्स ऑफ द कैटिलेज, मैट्रिक्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू इज मेड अप ऑफ व्हाट ना? हाइलुरोनिक एसिड। एंड आप लोग 12th में भी पढ़े हो, हाइलुरोनिक एसिड इज प्रेजेंट, that is act as a cementing between the granulosa cells of the granulosa layer। तो ओवम के चारों तरफ जो ग्रेनुलोसा लेयर होता है ना, जो ग्रेनुलोसा सेल और ग्रेनुलोसा सेल को सीमेंटिंग कौन करता है? हाइलुरोनिक एसिड, एंड दैट इज बाय हाइलुरोनिडेज। That is why the sperm contains what na? Hyaluronidase, which will penetrate to dissolve this hyaluronic acid। याद आया? And this is also present in the chondroitin sulfate। Chondroitin sulfate is a component of the matrix of cartilage। cartilage में जो matrix है उसमें chondroitin sulfate होता है, and that also contains what na? Glucosamine। Number 3, sugar acid। Here the acidic group present in sugar। इसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कार्बिक एसिड, क्लोरानिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, ग्लूकुरोनिक एसिड। नेक्स्ट नंबर 4, sugar alcohol। Here the alcohol group present in sugar। यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोग देंगे ग्लिसरॉल, एनिटॉल। जैसे कि ग्लिसरॉल आप बोल सकते हैं दैट इज हेल्प्स इन द लिपिड सिंथेसिस, एनिटॉल प्रेजेंट इन द ब्राउन एनर्जी। किसी कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, नहीं तो हम लोग डाइसैकराइड स्टार्ट करेंगे। बताइए आप लोग को समझ में आ रहा है? इजी है? बायोमोलिक्यूल चैप्टर की डिफिकल्ट है? इजी है भाई, बहुत इजी है। थोड़ा सा केमिस्ट्री पॉइंट है, बहुत ज्यादा हम लोग इसका मैकेनिज्म वगैरह में तो जाएंगे नहीं, स्ट्रेट टू द पॉइंट है। उसका डेरिवेशन, उसका मेनली एप्लीकेशन पार्ट से क्वेश्चंस रहता है। सर
मैं आपका आवाज सुन लिया। आपको क्या तकलीफ है आप बोल सकते हैं। तकलीफ नहीं है सर ऐसे मुझे आप बोलिए। पूछ रहा था बीटा राइबोस और बीटा डीऑक्सीराइबोस का सेकंड पोजीशन में जो डिफरेंस था वो एक बार बोल देंगे। नहीं बोल सकते भाई, एक ही बार बोलते हैं। ऑल इंडिया रेडियो एक ही बार बोलता है। ऑल इंडिया रेडियो एक ही बार बोलता है। अगर आपको सुनना है तो रेडियो ऑन करके रखना है। सेकंड पोजीशन अगर रिमूव हो जाएगा तो डीऑक्सीजनेशन हो जाएगा। डीऑक्सीजनेशन हो जाएगा तो राइबोस चेंज इनटू डीऑक्सीराइबोस। बस इतना ही याद रखना। हम लोग कंटिन्यू करते हैं into the next, that is oligosaccharide. ठीक है, ऑलिगो का मतलब क्या है भाई? ऑलिगो मतलब क्या है? ऑलिगो सुगर, ऑलिगोसैकेराइड क्या है? ऑलिगो का मतलब होता है फ्यू। And that oligosaccharide are actually formed of 2 to 9 monosaccharide subunit. Two to 9 monosaccharide subunit to form what ना oligo. अगर 9 से ज्यादा हुआ तो क्या हो जाएगा? Poly. तो 2 to 9 monosaccharide subunit जैसे कि हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। पढ़े हो? इसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इज ए डिहाइड्रेशन प्रोसेस के हाइड्रेशन प्रोसेस, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। किस किस के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है? पोजीशन की बात नहीं कर रहे, पोजीशन तो 1000 है, 1 1 1 4 1 6। आप बताइए, 2 शुगर के बीच में ही होगा। क्या बात है? अरे शुगर के बीच में ही ग्लाइकोसाइडिक होता है, 2 शुगर के बीच में ही ग्लाइकोसाइडिक होता है। मैं बोल रहा हूँ who participate in the glycosidic bond. Now one sugar with alcoholic group, another sugar with aldehyde or ketone group will contribute to release the water molecule. Then that bond is called as what? Glycosidic. अब वो देखना पड़ेगा कि किस किस पोजीशन में हो रहा है। मैं आपको सब बताऊं। तो 2 to 9 monosaccharide subunit with the help of or by means of glycosidic bond glycosidic bond is to be contributed by alcohol group of 1 saccharide with aldehyde or ketone group of another saccharide। मतलब मोनोसैकेराइड होगा ये सारे के सारे। Alcohol group of 1 monosaccharide with the aldehyde or ketone group of another monosaccharide with the release of water molecule. So it is a dehydration. That is the reason why the glycosidic bond is a dehydration with the release of water molecule in between these two monosaccharide subunit.
ठीक है, चले हम लोग नेक्स्ट पेज में। अगर 2 मोनोसैकेराइड हो गया तो क्या बोलेंगे उसको? डाइसैकेराइड। 3 हो गया तो ट्राइसैकेराइड। हम लोग के सिलेबस में सिर्फ डाइसैकेराइड, तो हम लोग डाइसैकेराइड पढ़ लेते हैं। So I'm coming to the next page. Disaccharide. So disaccharide is actually two monosaccharide subunit with the glycosidic linkage. तो मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, आप समझा रहा हूँ कि किस बॉन्ड को कैसे बोलते हैं। होल्ड ऑन फॉर अ मिनट। पहले वाला आप लोग को समझाने के बाद आप लोग लिखेंगे, कंटिन्यू करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। एक्चुअली यहाँ पे देखिए फर्स्ट पोजीशन में OH ऊपर है कि नीचे? मतलब अल्फा फॉर्म है कि बीटा फॉर्म? अल्फा फॉर्म है। नाउ दिस इज अनदर अल्फा ग्लूकोज सपोज्ड टू। पोजीशन देख लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो, that gives rise to the removal of this water molecule with the formation of what na bond called as glycosidic bond. अब ये क्या है, मोनोसैकेराइड है कि डाइसैकेराइड है? This disaccharide is called as what? This disaccharide is, this is alpha glucose. This is also alpha glucose. And the bond which is found between these two, it is called as maltose. तो maltose का सब यूनिट क्या है? अल्फा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज। तो बॉन्ड का नाम क्या हो जाएगा ना, 1 and 4 के बीच में हो रहा है कि नहीं? एंड बोथ आर द अल्फा, so that is why it is alpha 1,4 glycosidic bond. ठीक है, चलिए कंटिन्यू करिए। Now to the second one.
See here, second one. मैंने सेकंड वाला ग्लूकोज को थोड़ा सा 180 डिग्री मूव करा दिया, दिख रहा है आपको? सेकंड डायग्राम में देखिए, पोजीशन देखिए, ये उल्टा हो गया है, मैंने ग्लूकोज को मूव करा दिया है, उसको 180 डिग्री मूव कराया है। नाउ इट गिव्स राइज टू व्हाट? किस किस के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ? बिटवीन द 1 and 1 विद द रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। बट आप देखिए फर्स्ट पोजीशन में नीचे दोनों का ही OH पोजीशन, OH था कि नहीं? यहाँ पे दोनों का ही OH था, मतलब ये अल्फा फॉर्म है कि बीटा फॉर्म है? अल्फा फॉर्म है। दिस इज आल्सो अल्फा ग्लूकोज, this is also alpha glucose, that together to form trehalose alpha 1,1 glycosidic। एंड ट्रिहालोज कहाँ पे प्रेजेंट होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिहालोज का फंक्शन लोकेशन मतलब कंपोजिशन पूछता है। ट्रिहालोज प्रेजेंट इन द हेमोलिम्फ ऑफ इंसेक्ट। हम लोग पढ़े हो कि इंसेक्ट दैट इज ओपन सर्कुलेशन की क्लोज सर्कुलेशन, बिकॉज इंसेक्टा कम्स अंडर आर्थ्रोपोडा एंड आर्थ्रोपोडा में होता है ओपन सर्कुलेशन विथ व्हाट? ट्रू सिलम। तो ट्रू सिलम प्रेजेंट है प्लस ओपन सर्कुलेशन है, तो मींस इसका मतलब क्या हो गया? तो ब्लड इज प्रेजेंट विद इन द ब्लड वेसल और प्रेजेंट इन द ओपन स्पेस, then in that case we can say the hemocoelom is present, and hemocoelom में जो blood present है उसका नाम है hemolymph. So here the hemolymph of the insect that contains trehalose. Complete है? Yes or no? Yes. चलिए थर्ड में आते हैं। पोजीशन देख लेते हैं। This is alpha glucose. This is also alpha glucose. उस पोजीशन में OH नीचे है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे बॉन्ड किस किस के बीच में फॉर्म हुआ? 1 and 6 दिख रहा है आपको? This is isomaltose. Alpha 1,6 glycosidic. The next
हम लोग अभी करेंगे लैक्टोज। लैक्टोज में क्या क्या कंपोजिशन है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। देखिए यहाँ पे गैलेक्टोज भी बीटा है, ग्लूकोज भी बीटा है। एंड हाउ वी कैन डिफरेंशिएट विच इज ग्लूकोज एंड विच इज गैलेक्टोज? कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन सा ग्लूकोज है कौन सा गैलेक्टोज है? देखिए, दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यहाँ पे सिक्स पोजीशन है। ग्लूकोज में फोर्थ पोजीशन में OH नीचे था कि ऊपर था? नीचे था ग्लूकोज में। गैलेक्टोज में हो जाएगा ऊपर, OH हो जाएगा फोर्थ पोजीशन, बाकी सब सेम रहेगा। देन इट इज गैलेक्टोज, राइट? अब फर्स्ट पोजीशन में देख लीजिए OH ऊपर है कि OH नीचे है। अगर OH ऊपर फर्स्ट पोजीशन में हो तो क्या हो जाएगा? बीटा। समझे कि नहीं? So this is beta galactose and this is beta glucose. मैंने डिफरेंस बता दिया आपको, गैलेक्टोज और ग्लूकोज में डिफरेंस क्या है। एंड यू कैन सी इन द ग्लूकोज इट इज OH written above. This is called as lactose. लैक्टोज का बॉन्ड का नाम क्या होगा? बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक। समझे या नहीं समझे? क्लियर है? लास्ट में आते हैं, दैट इज सुक्रोज। सुक्रोज का कंपोजिशन क्या है? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। कंप्लीट है सबका? See, this is actually alpha glucose.
अल्फा ग्लूकोज इसीलिए क्योंकि फर्स्ट पोजीशन में नीचे यहाँ पे क्या था, OH था, ठीक है। एंड दिस वन इज एक्चुअली बीटा फ्रुक्टोज। व्हाइट इज बीटा फ्रुक्टोज क्योंकि OH ऊपर था यहाँ पे, दिख रहा है आपको। मैंने फ्रुक्टोज का जो डायग्राम किया था सिंगल, उसको मैंने 180 यहाँ पे डिग्री मूव कर दिया है, ताकि वन पोजीशन जो राइट साइड में था वो भी लेफ्ट साइड में आ गया, ताकि मैं बॉन्ड आपको बनाकर दिखा सकूं कि कैसे बॉन्ड बनता है। दैट इज बाय इट इज अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा फ्रुक्टोज। अब दोनों के बीच में अगर बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, then that gives rise to the release of water molecule here, and the bond is called as what? This is sucrose. सुक्रोज का बॉन्ड का नाम क्या होगा? अल्फा ग्लूकोज फर्स्ट पोजीशन, बीटा फ्रुक्टोज सेकेंड पोजीशन। दिख रहा है आपको? तो 1 अल्फा 2 बीटा ग्लाइकोसाइडिक, 1 अल्फा 2 बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ऐड नहीं किया था, रिलीज नहीं किया था, वो भी ऐड। तो 1 अल्फा 2 बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड दैट इज सुक्रोज। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। सबका क्लियर है? बहुत बढ़िया। बाकी सब्जेक्ट भी ऐसे ही क्लियर रहिए, नीट आपका हो जाएगा आराम से। So coming to the next, reducing and non-reducing sugar. किसको बोलते हैं reducing sugar? Which sugar can be act as a reducing sugar? Tell me. मैंने आपको डेफिनेशन पूछा है, एसोसिएशन रीजन क्वेश्चन बनाना है कि नहीं? अगर एसोसिएशन रीजन क्वेश्चन बनाना तो क्वेश्चन को पहले समझो। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा? व्हाट इज रिड्यूसिंग शुगर? ये है करेक्ट आंसर। इसलिए क्वेश्चन को समझो पहले। Those who reduce the cupric ions into cuprous, those who are reduce the cupric ion into cuprous are called as reducing, and this property is present in those sugar which have free aldehyde group or ketone group. ये है दो क्राइटेरिया, जिसके पास फ्री aldehyde ketone group present होगा, that able to reduce the cupric into cuprous, then that sugar is called as what? Reducing sugar. अभी second question है, what are the reducing sugar example with exception? समझे? All monosaccharide, all disaccharide, except सुक्रोज एंड ट्रिहालोज। एनसीईआरटी के हिसाब से कल सुक्रोज दिया है, सो रिमाइंड उसको ही आप याद रखिए, क्योंकि ट्रिहालोज के केसेस में भी नो एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप फ्री प्रेजेंट, दैट इज व्हाई दे आर व्हाट? नॉन रिड्यूसिंग। सुगर with free aldehyde group and free ketone group, और लिख दीजिए free aldehyde और ketone group, and are able to reduce cupric into cuprous are called as reducing sugar. Example, all monosaccharide,
all disaccharide except एनसीईआरटी के हिसाब से जा रहे हैं सिर्फ सुक्रोज इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर as because the formation of the bond, इसीलिए मैंने बॉन्ड दिखाया सुक्रोज का 1 alpha 2 beta, and during the formation of this 1 alpha 2 beta the free aldehyde and ketone group being used, there is no free aldehyde ketone group after the bond formation, that is why it is non reducing sugar. ठीक है. Now यहाँ पे हम एप्लीकेशन रिड्यूसिंग शुगर के एप्लीकेशन क्या हो. देखो ग्लूकोज क्या है, रिड्यूसिंग शुगर के नॉन रिड्यूसिंग शुगर. ग्लूकोज क्या है, रिड्यूसिंग शुगर. आपको पता है कि ग्लूकोज एक्चुअली हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस की लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंस. बताइए, what is the meaning of high threshold and what is the meaning of low threshold substance? आप अपने अंदाज से बोल रहे हैं कि कुछ जानते हैं बोल रहे हैं. नीट के लिए अंदाजा लगाना बहुत हानिकारक है, समझेगी नहीं. जानते हो what is the definition of high threshold? बोलो जोर से. ज्यादा. Those substance which are 100% absorbed in the nephron. आप लोग पढ़े हो 11th में कि ब्लड जो है फिल्ट्रेट होता है इन द ग्लोमेरुलस, enters into Bowman's capsule, now called as glomerular filtrate, passes through the PCT, loop of Henle, DCT, collecting duct, collecting tubule, finally it is called as urine. ठीक है. When it is passes through the different duct of the nephron, it is called as nephric filtrate. तो नेफ्रिक फिल्ट्रेट का कंपोजिशन एंड यूरिन का कंपोजिशन अगर देखा जाए, नेफ्रिक फिल्ट्रेट में ग्लूकोज प्रेजेंट है, अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है, बट यूरिन does not contains glucose and does not contain amino acid. Means all the 100% glucose and amino acid absorbed from the nephron into blood again. Those substance, मैं again definition बोल रहा हूँ, those substance which will 100% absorb from the nephron and are absent in the urine are called as high threshold substance. And those which will not 100% absorb from the nephron will definitely present in the urine are called as low threshold substance. And those substance which will 0% absorb from the nephron and are 100% present in the urine are called as non-threshold substance. High threshold, low threshold, non-threshold. ठीक है. Conceptually you must sound. नहीं तो कैसे करेंगे ये सब. एसेसिनेशन आज के डेट में सबसे ज्यादा गलत कर रहे हैं. आप लोग पिछले साल जो फंसे हैं वही एसेसिनेशन में ही फंसे हैं, किसी लिए केमिस्ट्री का मार्क कम है कि नहीं. क्यों फंसेंगे भाई, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो. नाउ ग्लूकोज which is present in case of what? ना डायबिटिक पेशेंट. डायबिटिक पेशेंट में क्या है ना, ग्लूकोज लेवल हाई है कि लो है, ब्लड में हाई है. एंड ग्लूकोज का थ्रेशोल्ड वैल्यू कितना है, 180 मिलीग्राम पर 100 ml of blood. Sorry, gram. 180 gram per 100 ml of blood. That is actually the threshold value of glucose. Conceptually इसको समझिए. 180 gram per 100 ml of blood. Up to this, the glucose can be absorbed 100%. अगर 180 को क्रॉस कर गया ग्लूकोज का लेवल आपके ब्लड में तो 100% एब्जॉर्ब नहीं होगा. तो डायबिटिक पेशेंट में क्या है ना, ग्लूकोज लेवल बहुत हाई हो जाता है, दैट एक्सीड 180. अगर 180 एक्सीड कर गया तो ग्लूकोज तो बहुत आ गया, तो 100% एब्जॉर्ब नहीं. 100% कहां तक एब्जॉर्ब होगा, अप टू 180 100% एब्जॉर्ब हो जाएगा. 180 के बाद जितना बढ़ा हुआ है वो तो ग्लूकोज एक्सक्रेट हो जाएगा ना थ्रू द यूरिन. सो इन दैट केस द यूरिन विद ग्लूकोज या विदाउट ग्लूकोज. दैट इज व्हाई द डायबिटिक पेशेंट कंटेन्स द ग्लूकोज इन द यूरिन. तुम कैसे पता चलेगा कि डायबिटिक का यूरिन है कि नॉन डायबिटिक का यूरिन है. कैसे पता चलेगा कि उसका ग्लूकोज लेवल हाई है कि नॉर्मल है कि व्हाट ना अंडर कंट्रोल है, क्या है.
by means of this simple test called as Fellings or Benedict test. देख लेते हैं. Supposed to be we are taking the blood sample and मान लेते हैं blood sample of diabetes mellitus patient. ये विथ ग्लूकोज होगा कि विदाउट ग्लूकोज होगा? विथ ग्लूकोज, राइट? तो मेरे ब्लड सैंपल, सॉरी ब्लड सैंपल एंड यूरिन सैंपल, आई एम सॉरी, वी आर टेकिंग यूरिन सैंपल. We are taking urine sample. The urine sample of the diabetes mellitus patient with glucose present in the urine. Now हम इसमें क्या ऐड कर रहे हैं? फेलिंग सॉल्यूशन. फेलिंग्स का दो वेराइटी होता है. फेलिंग्स है, फेलिंग्स भी आप इसको इक्वली मिक्स कर सकते हैं, और वी कैन ऐड बेनेडिक्ट सॉल्यूशन. आइदर फेलिंग्स आप बेनेडिक्ट, दोनों में से कोई एक सॉल्यूशन आप ऐड कर सकते हैं. एंड दिस बेनेडिक्ट सॉल्यूशन और फेलिंग सॉल्यूशन कंटेन्स व्हाट? नाउ विथ Cu2+. अब आप मैकेनिज्म को समझिए. The sugar which will reduce the Cu2+ into Cu+ are called as what? Reducing sugar. And glucose यहाँ पे यूरिन में प्रेजेंट है, तो ये रिड्यूसिंग सुगर प्रेजेंट है. एंड हमने यहाँ पे जो सोल्यूशन दिया उसमें Cu2+ आयंस प्रेजेंट है. सो दैट मिक्सिंग, जैसे ही मिक्स होगा वो उसको रिड्यूस कर देगा कि नहीं? हमको पता नहीं है कि रिड्यूस हुआ है कि नहीं. पता करना है तो आपको हीट करना पड़ेगा उस सोल्यूशन. जैसे ही हम लोग हीट कर देंगे, ये सोल्यूशन अगर रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, then it is confirmed that the Cu+ are present. So it is red precipitation. And red precipitation is indicating that is with Cu2+ की Cu+. Cu+. अगर इसमें Cu+ नहीं होता तो ये रेड नहीं होता. रेड हो गया मतलब ये Cu2+ चेंज इनटू व्हाट? Cu+. तो रेड का इंटेंसिटी डिपेंड करता है कि शुगर का इंटेंसिटी और ग्लूकोज का इंटेंसिटी कितना होगा. अगर ब्रिकी रेड है, ऑरेंज रेड है, ब्राइट रेड है तो ग्लूकोज लेवल ज्यादा है. फेंट रेड है तो ग्लूकोज लेवल कम है. समझे? So this is all about disaccharide. Now चलिए ट्राइसैकराइड थोड़ा सा इंडिकेट कर देते हैं. थ्री मोनोसैकराइड सब यूनिट. एग्जाम्पल देंगे रैपिनोज. इसमें ये प्लांट प्रोडक्ट है, प्लांट में प्रेजेंट होता है. दैट इज अ स्वीटनर प्रेजेंट इन द प्लांट एंड दैट इज मेड अप ऑफ व्हाट? ग्लूकोज, galactose and fructose. The raffinose is formed of three subunits: glucose, fructose, and galactose. That is found in many plant. Complete हो गया? Now we are coming to the next topic, polysaccharide. Polysaccharide, it is formed of more than 9 monosaccharide subunit
It is formed of more than 9 monosaccharide subunit linked with glycosidic bond. अब ये आप लोग को बताना है कि पॉलीसैकेराइड इज प्रेजेंट इन द एसिड soluble फ्रैक्शन की insoluble फ्रैक्शन. Insoluble. मोनोसैकेराइड सर ये क्या होगा ना, दैट इज बायोमैक्रोमोलेक्यूल की माइक्रोमोलेक्यूल मॉलिक्यूलर मास और द वेट इसका क्या है, मोर देन 10,000. याद है? नाउ द क्वेश्चन इज पॉलीसैकेराइड whether it is reducing की नॉन रिड्यूसिंग सुगर. पॉलीसैकेराइड क्या है, विथ रिड्यूसिंग की नॉन रिड्यूसिंग, क्या होगा ये? नॉन रिड्यूसिंग. लेट्स सी. right end is called as reducing end. reducing end इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है. whereas left end is called non reducing end. क्या कर दिया क्या? ठीक पर एक पर्टिकुलर चेन का हमेशा क्या होता है ना, राइट एंड होता है लेफ्ट एंड होता है. मान लेते हैं ये एक पर्टिकुलर चेन है, पॉलीसैकेराइड का एक चेन है, इसमें बहुत सारे ऐसे मोनोसैकेराइड सब यूनिट है. उसका एक एंड जो होगा, दिस इज कॉल्ड एज लेफ्ट एंड एंड दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, द राइट एंड. तो राइट साइड में जो मोनोसैकेराइड प्रेजेंट है लास्ट में, तो हमेशा लेफ्ट को हम लोग फर्स्ट बोलते हैं, राइट को हमेशा लास्ट बोलते हैं. तो राइट साइड में जो लास्ट शुगर और मोनोसैकेराइड प्रेजेंट है, उसमें क्या प्रेजेंट है, फ्री एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट और एब्सेंट, फ्री एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट. एंड जो फर्स्ट दैट इज लेफ्ट एंड में जो अभी जो प्रेजेंट है एक्चुअली जो शुगर और मोनोसैकेराइड दैट इज विदाउट एनी फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप. फिर आप बताइए ये नॉन रिड्यूसिंग कैसे? इसमें तो दो एंड है, रिड्यूसिंग भी है नॉन रिड्यूसिंग भी है. देन हाउ द पॉलीसैकेराइड इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर? इसलिए मैंने क्वेश्चन पूछा. इस शुगर में तो यहाँ पे पॉलीसैकेराइड में तो रिड्यूसिंग एंड तो है ही, फ्री एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप तो प्रेजेंट है. देन हाउ इट इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर? टेल मी. नहीं आ रहा दिमाग में? अरे भाई पॉलीसैकेराइड बल्क है कि सिंगल है? बल्क ऑफ मोनोसैकेराइड. तो इतना सारा मोनोसैकेराइड में एक फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर पाएगा, जीरो के बराबर. दैट इज व्हाई इट इज नॉन रिड्यूसिंग. So I'm coming to the first homopolysaccharide. Here the same type of or similar monosaccharide subunit. Similar monosaccharide subunit. इसके अंडर फर्स्ट एग्जांपल आते हैं. ग्लाइकोजेन.
ग्लाइकोजन क्या है? स्टोरेज है कि स्ट्रक्चरल है? प्लांट स्टोरेज की एनिमल स्टोरेज? कहाँ पे स्टोर होता है? कहाँ पे स्टोर होता है? लीवर में. लीवर इज द स्टोरेज ऑर्गन, राइट? द प्रोसेस ऑफ द कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन इज कॉल्ड एज ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, लिपोजेनेसिस. कौन सा? ग्लाइकोजेनेसिस. ग्लाइकोजन फॉर्मेशन under the influence of which hormone? Glucose into glycogen, insulin. Glucose into glycogen, insulin. Glycogen into glucose, glucagon. Breakdown of glycogen into glucose is called as what? Na? Glycogenolysis. मैं क्लास में ऐसे डायरेक्टली इसीलिए जानबूझ के आप लोग पूछा था कि आप लोग यहाँ पे जितना कंफ्यूज हो वो कंफ्यूजन हट जाए और एग्जाम में आप लोग एकदम श्योर शॉट एग्जाम ठीक करके आए. इसीलिए मैं आपको इसी टाइप का ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ. So glycogen, first of all, that is formed of 30,000 alpha glucose subunit. So one glycogen molecule is formed of how many glucose subunit? 30,000. Which glucose? Alpha glucose. It is branched with alpha 1,4 and alpha 1,6 glycosidic bond. मैंने आपको अल्फा 1,6 इसीलिए दिखाया था ताकि आपको दिमाग में ये चले कि अल्फा 1,6 बनता कैसे. अल्फा 1,6 यहाँ पे क्यों प्रेजेंट होगा? वाई? अगर ये अनब्रांच्ड होता तो क्या अल्फा 1,6 प्रेजेंट होता? इसीलिए मैंने आपको दिखाया. मान लीजिए सपोज टू बी दिस इज व्हाट ना ग्लाइकोजन. दिस इज एक्चुअली ब्रांच, राइट? यहां पे आप देखिए these are actually the branching point. These are actually the branching point. ब्रांचिंग पॉइंट को छोड़ने से बाकी जो स्ट्रक्चर है वो सब स्ट्रेट है कि नहीं? खाली आप ब्रांचिंग पॉइंट को छोड़ दीजिए, बाकी सब क्या स्ट्रेट? तो स्ट्रेट अगर है तो क्या होगा? अल्फा 1,4 होगा. यस और नो? लेकिन जहां पे ब्रांचिंग पॉइंट स्टार्ट हुआ है उस पॉइंट में कौन सा बॉन्ड होगा? 1,6. एंड इसीलिए मैंने डायग्राम दिखाया था कि कैसे अल्फा 1,6 बनता है. ठीक है? दैट इज बाय अल्फा 1,6 only at branching point. So alpha 1,6 will be only present at branching point. बाकी जगह पे 1,4 होगा, सिर्फ ब्रांचिंग पॉइंट में आपका 1,6 होगा. एंड क्योंकि ये अल्फा ग्लूकोज से बना है तो इसीलिए अल्फा हो गया ग्लूकोज. अल्फा 1,4 अल्फा 1,6. इट इज एनिमल स्टोरेज पॉलीसेकेराइड. in liver and glycogen अगर आयोडीन के साथ ऐड होगा तो कौन सा कलर प्रोड्यूस करेगा? रेड कलर. ब्लू नहीं, ब्लू स्टार्च के साथ करता है. ग्लाइकोजन प्लस आयोडीन गिव्स राइज टू रेड प्रेसिपिटेशन. इतना पॉइंट काफी है. मेनली यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है नेम ऑफ द बॉन्ड, नेम ऑफ द सब यूनिट, वेदर इट इज ब्रांच्ड और इट इज अनब्रांच्ड. यही क्वेश्चन पूछता है. नंबर 2 स्टार्च. is also formed of alpha glucose, it is also branched
So it is branched with alpha 1,4 and alpha 1,6 both. And जैसे कि मैंने बोला अल्फा 1,6 कहाँ होगा? सिर्फ ब्रांचिंग पॉइंट में. Starch actually plant storage polysaccharide. स्टार्च प्लांट स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है एंड स्टार्च का दो सब यूनिट. एंड व्हाट इज दिस टू सब यूनिट? वन इज अमाइलोज, अनदर इज अमाइनोपेक्टिन. इनमें से अमाइलोज एक्चुअली अनब्रांच्ड, एक्चुअली हेलिकल होता है. अमाइलोज जो है दैट इज एक्चुअली हेलिकेज टाइप ऑफ स्ट्रक्चर. ऐसे होगा लाइक दिस. तो अमाइलोज में 1,4 होगा कि 1,6 होगा कि बोथ होगा? ओनली 1,4. लेकिन अमाइलोपेक्टिन जो है वो अनब्रांच्ड, सॉरी ब्रांच्ड. लाइक दिस, जैसे हम लोग अभी ग्लाइकोजन का देखे थे लाइक दिस. दैट इज बाय बोथ अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6. एंड स्टार्च अगर आयोडीन के साथ ऐड होगा तो क्या दिखेगा? ब्लू कलर. ब्लू भी होता है, ब्लू ब्लैक मिक्स भी होता है. मोस्टली इट इज ब्लू कलर. एंड ये ब्लू कलर किसके वजह से? अमाइलोज के वजह से कि अमाइलोपेक्टिन की वजह से? अमाइलोज. क्योंकि अगर अमाइलोपेक्टिन की वजह से होता तो रेड होता. सेम ब्रांच टिप. इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द हेलिकल. ये हेलिकल वजह से ही ये ब्लू कलर का, क्योंकि जहां पे हेलिक्स है उसी में जाकर आयोडीन ट्रैप हो जाता है. एंड एवरी 6 ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन एवरी हेलिक्स. ईच हेलिक्स में कितना प्रेजेंट है ना? 6 ग्लूकोज है. एंड एवरी 25 ग्लूकोज के बाद एक एक ब्रांचिंग पॉइंट आता है. तो ये भी आप खाली समझ सकते हैं कि ब्रांचिंग पॉइंट का डिस्टेंस क्या है ना? 25 ग्लूकोज सब यूनिट. तो एवरी 25 ग्लूकोज सब यूनिट के बाद एक एक ब्रांचिंग पॉइंट आता है. चलिए, दिस इज द एंड ऑफ द स्टार्च. एनी एल्स? किसी और कोई डाउट है? सर. बोलिए. हाँ सर, बोल रहे जो एमाइलोज सब यूनिट है उसमें आप लिखे हैं ओनली अल्फा 1,4. उसका मतलब एक बार समझा दीजिएगा. क्योंकि उसमें अनब्रांच्ड है, तो ब्रांच होता तो 1,6 होता ना. अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है. आगे चले. We are coming to the next, that is number 3. Cellulose. Okay, comes to the cellulose. First of all, cellulose is plant structural polysaccharide. Point number 2, it is formed of 6,000, each cellulose molecule formed of 6,000 beta glucose.
तो सेलुलोज में एक एक सेलुलोज मॉलिक्यूल में कितना बीटा ग्लूकोज है ना, 6000. नेक्स्ट पॉइंट, इट इज अनब्रांच्ड. अनब्रांच्ड है तो 1,4 होगा कि 1,6 होगा कि बोथ होगा, एंड इट इज अल्फा 1,4 की बीटा 1,4, क्योंकि ग्लूकोज सब यूनिट कौन सा है, बीटा. बाकी आप लोग अगर देखेंगे पेपर पेपर हम लोग जो लिखते हैं रोज, पेपर क्या है ना, 100% सेलुलोज, क्योंकि पेपर किससे बनता है, पल्प से बनता है. ठीक है, तो वो पल्प से बनता है तो 100% सेलुलोज है. लोग कॉटन कपड़े पहनते हैं ना, दैट इज ऑलमोस्ट 90% सेलुलोज. फूड जो है दैट इज ऑलमोस्ट 50% सेलुलोज. लिनेन, जूट, वो भी सब 100% सेलुलोज से बनता है. एंड cellulose, when it is treated with alkali, जैसे हम लोग सेलुलोज को अल्कली में ट्रीट करते हैं, दैट विल फॉर्म व्हाट ना, रेयन, एंड रेयन से बनता है आर्टिफिशियल सिल्क. फिर हम बोलेंगे कि आर्टिफिशियल सिल्क इज ए प्रोटीन और इट इज ए कार्बोहाइड्रेट, because artificial silk is rayon and rayon formed from cellulose when it is treated with alkali. but हम लोग जो नेचुरल सिल्क पहनते हैं वो क्या है, 12th में पढ़े हो, सेरिकल्चर पढ़े हो ना. नेचुरल सिल्क सिल्क वर्म से बनता है, एंड वो सिल्क वर्म जो प्रोड्यूस करता है अपने बकल कैविटी माउथ से, दैट इज एक्चुअली व्हाट, अ प्रोटीन. नेचुरल सिल्क इज अ फिब्रोइन प्रोटीन. दैट इज व्हाई artificial silk is a carbohydrate whereas natural silk is a protein. As a last point, cellulose को हम लोग बोलते हैं most abundant. Most abundant carbohydrate and most abundant organic compound in biosphere. Most abundant carbohydrate in the biosphere is cellulose, and second most abundant in the biosphere is रूबिस को कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं है, रूबिस को प्रोटीन है, रूबिस को एक एंजाइम है, एंड एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन. मैंने आपको क्या पूछा, क्वेश्चन को बिना सुने आंसर देना मजबूरी हो गया आपको, सुधारिए. मैंने पूछा क्या, सेकंड मोस्ट अबाउंडेंट कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोजन सेकंड मोस्ट अबाउंडेंट है, बट काइटिन, कार्बोहाइड्रेट काइटिन है कि नहीं, एंड काइटिन कहां पे, एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स, एंड आर्थ्रोपोड इज द लार्जेस्ट फाइलम अंडर द किंगडम एनिमलिया. कंसेप्चुअली हमेशा क्वेश्चंस को रीड करिए.